ओके, वेलकम टू द शफात नेटवर्किंग। सो आज का जो टॉपिक है सीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग का, जिसको हम डीएससीपी कहते हैं। डीएससीपी का मतलब है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक राउटर होगा, दिस इज अ राउटर हियर, एंड इस राउटर का नाम है R1, और इसके साथ एक स्विच लगा है छोटा सा, दिस इज स्विच, और इसके साथ छोटे छोटे एक डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस लगे हैं, स्मॉल पीसीज, एंड कोई भी प्रिंटर लगा हो, कुछ भी लगा हो इस डिवाइस के साथ, या कुछ और राउटर लगा हो, या कोई और डिवाइस लगा हो, नेटवर्किंग डिवाइस। तो जब हम इस स्विच के साथ हम कनेक्ट करेंगे इन डिवाइसेस को, मान लो हमने इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसको किसी भी पोर्ट के साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, और इसको इसके साथ कनेक्ट किया। मान लो हमने राउटर वन का आईपी एड्रेस जो है 10.0.0.1, इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 है। अब जो 10.0 और ये स्विच एक है इधर वन, और ये है PC1, और PC1, PC2, PC3। अब क्या होगा, हमें PC1 को आईपी, मान लो हम PC1 को आईपी एड्रेस देंगे 10.0.0.2 बिकॉज, और इसको भी देंगे 10.0.0। हमें मैन्युअली सबको आईपी एड्रेस देने हैं। इफ देयर आर 100 PCs, तो हमें 100 PC को मैन्युअली आईपी एड्रेस देना है। In order to get rid from this, to give manually, to put manually IP address to the devices, so हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है, राउटर का फंक्शन एक और फंक्शन है जिसका नाम है कि वो ऑटोमेटिकली, दैट राउटर कैन गिव automatically IP address to other networking device। तो router can give automatically IP address to other networking device। मगर ये कैसे देगा, इस PC1 को हम कैसे हम ऑटोमेटिक प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस, PC2 को कैसे प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस, PC3 को कैसे प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस। उस प्रोटोकॉल, उस फंक्शन, उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं डीएससीपी, यानी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। जिसकी वजह से राउटर का एक ऐसा फंक्शन बनता है, एक सर्वर बनता है। राउटर कैन बी यूज्ड एज अ सर्वर to give IP address to all the PCs, to all the networks which are attached with the router through the switch. It is not necessary that switch will be connected, but especially when there is router, there may be switch or other network devices which are when there is only one network. हमें पता है जब एक ही नेटवर्क होगा तो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें एक में से एक स्विच की जरूरत पड़ता है। तो हम डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, उस चीज को हम प्रोटोकॉल डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। नाउ लेट अस सी ऑन डायरेक्टली ऑन द लैब, हम इसको लैब में कैसे करते हैं। तो हम इसको पैक ट्रेसर में हम इसको हम लैब में आपको दिखाऊंगा, तो वही आपको समझ आएगा। तो डायनेमिक डीएससीपी जो है वो हम कैसे एक्टिवेट करते हैं राउटर पर, और कैसे वो पीसीज पर आईपी एड्रेस देगा। दिस इज अ लैब। नाउ हियर आई विल सिलेक्ट द राउटर हियर, दिस इज अ राउटर, and here this is a switch, and now PCs are there. This is a PC1, PC2, and PC3. So okay, now I will get this, I will connect it here, and I will connect this PC to this switch, and this to this, and this PC to this switch. So this is the configuration which I already do. Now what you have to do, now this is a PC1, I have to select here only thing, desktop down, and desktop I have to select here DHCP. There are two types, one static and other DHCP.
Static means that you have to put the manually IP address. But DHCP means that when I select DHCP, the router will send the automatic IP address to this PC. Okay, this is not a IP address. This is not a IP address here provided by this. Now I have to select here uh, DHCP. Okay, when I activate the DHCP, it will automatically send the IP address to this PC. Now we'll go through the router here and we'll configure here and we will name it router R1 and router R1. Okay, now तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले राउटर को एक्टिवेट करेंगे। तो हम करेंगे इधर config f interface f0/0, इसको नो एक्सेस करेंगे, नो शटडाउन। इसको हमने एक्टिवेट किया तो आईपी एड्रेस देंगे हम, फिलहाल हम 2.0.0.1 देंगे हम इसको 255.255.0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे इधर। हमें क्या करना, हमें अब DHCP यानी हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें 10.0.01 IP address, we provide the 10.0.01 IP to the port f0/0. So this means that 10.0.01 same IP address cannot be given to any of the PCs. So what you have to do? We have to make a IP. We have to write IP DHCP pool. Pool means we have to give the pool. We make a one pool. We make a one group of IP address which will be provided to these three PCs. That DHCP pool, that DHCP group name is, we can call that name ABC. Now, after that, we have to write network. From which network you will provide IP. आप किस network से आप इसको provide करोगे IP address. वो network क्या है, 10.0.0 और उसके बाद इसका subnet, उसका mask 255.255 sorry 255.0.0.0 and default router means gateway from which IP address, the gateway, the address of this port f0/0 is 10.0.0.1, which will be the gateway for these PCs. Gateway means the PC when they will communicate with this router, how they will communicate with this router through this IP address, through this gateway IP address. That's the 10.0. This 10.0.01 is gateway for all the PC which are connected with this router to the switch. That's why 10.0.0.1 is a gateway for this router. Okay, now exit. Now we have to provide an IP address, so we have write a wrong mask 255.0.0.0. Now, okay, show IP. If I write here show IP interface brief, then you will get 10.0.0.1. Now what we write? Okay. Now we'll see, is this PC0 got the IP address now here? You will see 10.0.02, 10.0.0.3, and 10.0. Okay, sorry, 10.0.0.4. So this means that they get, without entering any IP address, they get manual, they get automatic IP by activating the DHCP protocol in the router R1. So if we want to ping here any PCs here, ping 10.0.0.1, this is a router, so it will communicate with the router 1. Or if we ping here 2, it will communicate the PC0. And here if we communicate with 3, it will communicate with also PC3. So this is the whole about DHCP. So DHCP is nothing, it is a dynamic host control protocol by which the router can provide the automatic IP address to other PCs. So this is the configuration, how to configure DHCP in the router. Thank you. I hope you understand this video.